जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और एक चीज़ जो हम सब करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं और अनकॉन्शियसली करते हैं, वो है सेल्फ टॉक, अपने आप से बातचीत। और ये जो सेल्फ टॉक हम करते हैं, इसमें हम कभी अपने आप को खुश करते हैं, कभी हम उदास करते हैं, कभी हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं, कोसते हैं, कभी हम अपने आप को हिम्मत दिलाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। कभी ये जो हमारी सेल्फ टॉक होती है ये शैतानी होती है, कभी ये रहमानी होती है। लेकिन अब से जो भी सेल्फ टॉक होगी, जो भी बातें हम अपने आप से करेंगे, वो कॉन्शियसली करेंगे, ताकि हमें पता तो हो कि हम बात कर क्या रहे हैं। और जब कॉन्शियस होंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बातें करेंगे। कौन कॉन्शियसली बुरी बात करेगा, कौन कॉन्शियसली बुरी सोच सोचेगा और अपने आप को इस तरह से ट्रीट करेगा? अच्छा ही करेंगे। तो कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है और अपनी सेल्फ टॉक पर नज़र रखना है और अच्छी अच्छी बातें करना है। आज के शो में बहुत कुछ हो रहा है। आज के शो में हम आपकी मुलाकात बहुत सारे गेस्ट से करवाएंगे, बहुत सारे इस तरह से। एक तो हमारी एक गेस्ट आएंगी, वो आपको ऑर्गेनिक ब्यूटी ऑर्गेनिक आइटम्स प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी IQ ऑर्गेनिक के नाम से, और वो उनके हवाले से भी बताएंगी। फिर दूसरा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कौंसिल ऑफ इटली इन कराची, और उनकी वाइफ भी होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इटालियन क्यूज़ीन वीक चल रहा है, मनाया जा रहा है। और कराची में भी मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ चैनल्स में भी इस क्यूज़ीन को मनाया जा रहा है। तो आज हमारे शो पे भी ख़ास एक इटालियन शेफ़ आए हैं और यहाँ कराची आपको वो इटालियन रेसिपीज़ भी बताएंगे। फिर हम इस जो इटालियन क्यूज़ीन वीक के हवाले से उससे भी बातचीत हम करेंगे। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। 17 साल से ये कुकिंग फील्ड में हैं और मैंने इनको देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इतने क्यूट हैं ये और काफ़ी यंग हैं ये। उन्होंने कहा ना, आई ओनली लुक यंग, आई एम नॉट दैट यंग। खैर एनीवेज, क्या राज है ये, आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं, शेफ़ मार्को को। Hello, gracias. Hello. How Hi. are you? Have a Welcome. seat, chef. Thank you. Yes, we'll do a little chit chat with you so that people can see your face, how cute you are. है ना, बहुत सारे cute. Chef, how did you end up being a chef? Why not a model? Why not an actor? The model for the height, because I'm not too. You know, Tom Cruise is very short-heighted. Yeah, you have to. Yeah, of course. You were not interested. Maybe not in this age. Okay. So, but now maybe sometime I think why I do this, because I'm too tired. No, I joke. No. It's always I always do with passion, and I don't feel tired. I don't feel angry sometimes, because I'm so busy with my mind. I say which is the next step, what I need to do, what I forget. A chef can never change his profession, I believe. You know, he loves this field so much. It's deep inside. Yeah, it's deep inside. So yeah. It's been like 17 years you've been 17 years. in this field cooking. So is this your first visit in Karachi? Yes, first. And Okay. I really like the building, the history, the people. They are so welcoming, very, very warmly. So did you get time to explore the not city? outside, but I'm speaking with all the people I met Okay. until now. They are so lovely, really. I'm sure you must be busy cooking every day. Yeah. But I get some chat. Good. I get the chance to speak with a very important people, and there are, you know, this is the passion give you know, when you do something and Yes. people appreciate. So this you don't have any price. Very true. Yeah. And I hope you must have tried a lot of Pakistani dishes as well, very spicy ones. Yeah. But I live in Dubai, so I get the chance of you get to some try Indian some, and Pakistani yeah. food. But for sure, the real taste is coming from here. So yes, I try, because in the hotel where I work and where I'm host, so we have a different restaurant, Chinese and things, but I always go to the original one. So, very good. Yes, you must try. So today we're learning a lot of Italian recipes from you. Yeah. So we'll start with the starter. Yeah. Let's go in so the it's kitchen. a bruschetta. Yes. It's a very simple one. And this very is your easy. very first experience in any show. Yeah. I'm your it very is. first host.
Yeah. I am honored. Thank you. All right, Chef Marco, let's start. So this is a normal bread. So bruschetta, it's something really simple, really fresh. Okay. There are thousands of way to modify, to put your touch. It can be with cheese, it can be with mushroom bruschetta, but the classic one, it's just with fresh tomato. Okay, and these so are the fresh cherry tomato can be cherry. I wanted to use the datterino. Okay. So or We pinolo. can start off with the cooking. Yeah. So because then we'll have to take a break in a... So the tomato, there are just cut it, small this, marinate with some herbs as basil. Can put oregano as well. Okay, we have olives, garlic, basil leaves. So the bread, it's just bake it from mass yesterday. Breads are really excellent, you know, these Italian breads. Yeah. With different flavors and textures and sizes. We like crunchy outside and soft from inside. Yeah. Yes. You have a lot of variety. Italian breads, they have a lot of variety. Yeah. But we have a word between French and Italian because, you know, to who do the best bread on the world. Oh, yes. Oh, okay. Bread a competition. lot of competition, culinary competition between French and Italian. There are, you know. नहीं मैं आपको समझ आ रही होगी ये जो भी बात कर रहे हैं मैं कुछ बीच में होगा तो मैं आपको साथ-साथ बताती भी रहूँगी. So we cut all the tomato. Okay. And we let them marinate with salt, pepper. And no cooking in this? No, this is very, very simple. We just toast the bread. Okay. So we just let some mark. You didn't bring butter today? Butter? Butter? No butter. Okay. No butter. I didn't do my breakfast, so I thought of doing it. We use the olive oil. Okay. So extra virgin olive oil. Okay. On the recipe, sometimes you find some mention EVOO, so extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil, yes. So a lot of people say, what is EVO? Oh, okay. So they don't know. That's like a short form. Of course, it's something because extra virgin olive oil, especially when you write a recipe, it's very. Use EVO. It's very difficult to. Will take so much time. So we cut all the tomato. Okay. Small days. Okay. Check always the bread. Just make a good mixture of everything and then. Yeah, exactly. So bread. Just to be crunchy. Okay. So salt. Salt. You can put a garlic directly inside with a microplane or chop it very fine, but I don't like. Why? Because you don't like garlic. I don't like to put it directly. Okay. But this is up to you. There are so how are you going to do it? So I will show you later. Okay. So I will just scrub on the top of the. For that I doing this part crunchy. Okay. So basil. This is fundamental. Fine. Okay. So chef, you're here for this event and you'll go back, or you're going to stay here? I will stay a few more days because I have some training, a lot of people requiring my presence. All right. So I'm Today very honored. also is a training day. You know, you're training a lot of viewers who are watching the show. But it's very simple. You will see. But when you bite, you will say, "Wow!" And you can feel. You close your eyes. You just stay outside in the balcony or sit. Oh, and enjoy. You will just thinking you are in Italy. Because it's very simple, but you have all the Mediterranean. Okay, Chef, what are you adding? Just tell the viewers, and we need to take a break right now. Yeah. So you just added oregano? Oregano, yes. Salt, pepper, little bit of pepper. And a little bit of basil leaves, chopped, and tomatoes. And that's it. That's it. Now we mixed. Okay. So can we take a break now? Yeah, sure. Okay. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे. आज शेफ मार्को हमारे साथ हैं, खास इटालियन क्यूजीन, ऑथेंटिक इटालियन क्यूजीन, और आगे भी बहुत सारे मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे. तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स.
अजय जी वेलकम बैक। और शेफ़ मार्को हमारे साथ हैं। हमने स्टार्ट लिया है एक स्टार्टर से। और व्हाट इज़ दिस स्टार्टर्स नेम? Bruschetta. 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 Okay. Yeah, bruschetta. So it's And it's a very simple starter. yeah, it's very simple starter. Tomatoes, basil leaves, and oregano, Yeah. and little salt and pepper. Yeah, salt and pepper. So we just marinate a bit. This one, it's balsamic. Balsamic, it's vinegar from Okay. Modena. Okay. So this is give a sweetness and sour. So Okay. sweet and sour, and it's very delicate. You can find this in any Yes. supermarket. Yes, we get all the Italian sauces here now. This is available very easy. good because I brought and it's aged, so it's very concentrated. okay. You can find balsamic from 100-year-old. It's very like a sugar The flavor. older the better. Yeah. Okay. So our bread, it's तो ये जी now ब्रेड भी तैयार हो गई है। ये देखिए ऊपर से इज दिस अ सर्टेन नेम फॉर दिस ब्रेड? this is called casereccio. Okay. Casereccio can be also round. Okay. Altamura, it's from Puglia, Okay. and they have the best flour. All new to us. So before I said we can put the garlic Yeah. inside, but actually what I like is just to do that. Because Okay, you don't have the pieces. This is a in your very mouth. good idea. Okay, so you just spread this melamine. Flavor. Yes. See? So Not too everything strong, mild. exactly, and is uniform. हाँ तो वो रफ टेक्सचर है उस पर आप सिर्फ गार्लिक ये एक तरह से ये काम देगा। Here we go. ठीक है। So you've learnt any Urdu language here? नहीं? Nei. नहीं। We can learn a little Italian. Yeah, of course. So gracias means like Grazie good. means thank you. Thank- Yeah. Why did I say gracias? Grazie mille. Okay, thank you for coming on my show. How do you say like good morning, hello, Buongiorno. bonjour? Buongiorno, sì. Buon appetito. Bon appetito. Buon Enjoy appetito. your It's meal. enjoy your meal. Yes. So this This is is a ready? very almost. So after you can cut in small pieces if you If you want to want. use for aperitivo. Okay. So when you see it before the welcoming, you just put this as a bite. Oh, okay. We just And put if some. anybody likes cheese, you can put cheese. You as can well. put a little bit of mozzarella, fresh mozzarella on the top. It's up to you. I mean, we can put a Okay. little bit of olive just to give some color, funny around. Making it Yeah. more tempting. More tempting, more colorful. Okay, Huh? good. And this is ready. Yeah, you can just finish with a little bit of pepper, little bit of salt. Nice. The chefs are There we go. expert in presenting And for sure, even a simple A touch recipe. of olive oil, Okay. always on the hand. Okay. There you go. And again, if you want, why not? Acha. This is more Then- for the funny things, Okay. just like that. Presentation बस देखें ना आप एक Yeah. simple सा starter Here we और go. ऐसे present करें. Very nice. I'll put it on the table. So now we go for the preparation Yes. of the Next pasta. recipe Yeah. is So our spaghetti. pasta boiling. Spaghetti, Okay. yes. So what are we making? So spaghetti carbonara. Carbonara. Carbonara, yeah. Carbonara is from, it's a recipe from the center of the Italy, Okay. from Rome. Okay. It's So it's classic. like one of the main Italian. For sure, a lot of Italian, they will kill me if I missing something on blah blah because Okay. they are very, in Rome, if you miss a step, Yeah. Obviously, the everybody products for must be sure. watching. Here I cannot use the right product because it's. Chef, we have a caller. Let me just take a call. Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रही थी? अच्छा अच्छा। कैसा लग रहा है आज का शो? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो देखना और अच्छी अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। कुछ हम आपको ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्किन और हेयर के लिए भी अभी। जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय करें अपना शो, नाश्ता करो अच्छे से। जी मेरी बहन से भी बात कर लें। अच्छा जी, करवाएं। Okay, so this is beef. Okay, this is beef and this is like a processed beef. It's a processed beef, yes. It's smoked and cured. It has fat. It has fat, and this is what we need on the pan. Okay, This is what we're looking for because it's the fat, the secret. I mean, Is this for the spaghetti? Sorry? This is for the pasta dish? Yeah. So we will just let. And have you added oil and salt in the water for boiling pasta? Just salt. Just salt, no oil. The oil we add just when we cook a fresh pasta. Oh, okay. Because there are a lot of starch. So. Okay. You know, here we always teach whenever you boil pasta, hamesha oil dale, salt dale, so you don't need to put oil. Only when it is salt. Very fresh. Only salt for Sirf taste. namak. Usually it's 10 grams of salt for 1 liter of water, 100 grams of pasta for liter. Okay. So if you cook 2 liters, 20 liters of water and 20 grams of. Chalo, theek hai. So there's another break we need to go on. And in this break, what you'll do is going to cut the pieces for this. Now we slice it. Usually we use pork. Okay. It's guanciale. No pork, only beef. This beef. This is beef. Okay. So we use a guanciale because actually guanciale have this part almost only fat. It's only white. Okay. And this is what you need for the pasta. Okay. So we slice and. All right. Chef, the pasta is boiling and you're slicing this. Yeah. So we're going to take a break and come back. Sure. एक break ले लेते हैं मुख्तसर सी और फिर वापस आते हैं और हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव वीकेंड्स। आज शेफ मार्को हैं हमारे साथ। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और अभी मुझे ये पता चला ये जो प्रोसेस्ड मीट होता है इसको कई साल लगते हैं और ये वाला जो मीट का पूरा पीस दिखाया था इसको 6 to 7 months लगे हैं और इसको हल्का सा you just marinate little seasoning and then just put it for processing. This is the process. It's a smoke process. It's a long process. Oh, okay. It's around 6 months. Can find also 12 months, 24 months. It's different. I mean, and it stays fresh. The thing is, this is fresh. You see, this is kind of fresh still meat, but more it's old, more it's dry, more it's flavoring. Okay. So this is the things. So ये जो slice किया था उसके thin slice किए, thin slice करने के बाद उसके छोटे slice किए. Okay. And now you're going to add the seasoning. Yeah. So no need to add any salt, any pepper. Nothing. Just pepper, but in the hand. Okay. In the hand, no oil, when this olive start oil? to caramelize, I put the pepper. Okay. To roast the pepper to take out all the oil, essential oil on the spice. सिर्फ pepper जाएगा. And no olive oil also? No olive oil. Nothing. I mean, this is not too fatty as the guanciale is. Okay. But still have a fat. And what about this is parmesan. This is pecorino. So I mix it because it's pecorino is very strong. ठीक है. So दो किस्म की चीज़ है, एक parmesan है और एक दूसरी है. Parmesan and pecorino. And yes. this eggs. And this is eggs, but in the hand, because otherwise will become an omelette. So you have 2-3 minutes with you, okay? Yeah. So there's a guest. I'll just go and speak to her. हाँ जी, आपको हमने कहा था कि आज कुछ हम आपको ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और इस हवाले से IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से बुशरा इकबाल हमारे साथ हैं। अपनी प्रोडक्ट्स का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है और ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको बताएंगी दे आर 100% प्योर ऑर्गेनिक। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे भाई हैं? क्या क्या लेकर आ गई हो आज मुझे ये बताओ। हम आपकी ऑडियंस जो सिर्फ किचन में काम करती रहती हैं उनको हमने बताना है कि अपनी स्किन को आपने किस तरह से अच्छा रखना है, अपने हेयर्स को कैसे अच्छा रखना है। किचन में काम कर करके वो अपनी स्किन केयर पर ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स नहीं करती, जिसकी वजह से जो है ना वो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सही है। और किसी को डार्क सर्कल का इशू है, किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन इशू है, नेल्स इशू है, हैंड फीट का बहुत सारे इश्यूज हैं, हर तरह के इशू जो है ना यहाँ से क्लियर हो जाना है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, मैं वही देख रही हूँ।
ये है लिप केयर का पूरा अच्छा मुझे ये बताओ ये अवेलेबल कहाँ पर है ये सारी? ये सारी हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल हैं www.iqorganicsolution.pk। अच्छा, वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है हमारा IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से, वहाँ से लोग बाय कर सकते हैं, आपको देखने वाले लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये मैं देख रही हूँ कि लिप एक्सफोलिएशन मतलब हम तो स्किन का करते हैं ना, ये लिप्स का भी है इसमें। जस्ट हमने अपनी स्किन को खूबसूरत नहीं बनाना, हमने अपने होंठों पर भी तवज्जो देनी है। इसी तरह चीज़। अच्छा और मुझे ये बताओ ये 100% प्योर है ऑर्गेनिक? 100% प्योर है। अक्सर लड़कियों को इशू होता है ना प्रोडक्ट्स में केमिकल्स ना हो, हार्श केमिकल्स ना हो, डेट्स में ये 100% प्योर है और इसको हर तरह के जो एज के लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा अभी जैसे स्किन के लिए क्या आप रेकमेंड करोगी जो आजकल वेदर चल रहा है? उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, विटामिन सी सीरम। अच्छा विटामिन सी सीरम है। यू नो विटामिन जो होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन के की बड़ी ज़रूरत होती है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, इसी तरह स्किन के लिए विटामिन सी बहुत जो है वो ज़रूरी है। सही है। तो कुछ लोग जो हैं वो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट हर कोई इसको नहीं यूज़ करता कि कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए ना। इसका तरीका क्या है कि मतलब 1-2 ड्रॉप्स लगा लें रात जी में? बिल्कुल, ये सीरम फॉर्म में है ना, तो इसको रात दिन में कभी भी ऐसे रात में सोते हुए? दिन में अगर लगाना तो आपने सन में नहीं जाना, हीट से प्रोटेक्ट रखना है। ये खास एक विटामिन सी का है। जी ये उस नीड को पूरा करते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जो हमारी हेयर हॉट सेल प्रोडक्ट है, वो है हेयर फॉल सीरम। ओहो ये तो सबकी मेरे ख्याल से खास तौर पे मर्दों में ये चीज हेयर फॉल और एलोपेशिया। शेफ मार्को, डू यू हैव अ प्रॉब्लम फॉर हेयर फॉल? Yes. Really? Yeah, in Dubai, you know, the water is very bad. Yes, it's the full chlorine of. water. I mean, it's to take the shower and things. We think it's not only in Dubai. It's all the place where. She has a solution for I'm that. from Italy, so my hair is very delicate, so I'm a little bit sensible on that. So yes. You're beauty conscious. You're beauty conscious. So Are you yes, really? we'll be interested on that. Okay, you can listen to her as well and treat your beauty. हाँ जी, तो ये इसके साथ क्या है? मर्दों को क्या होता है, एलोपेशिया का मसला हो जाता है, गंजपन आ जाता है, मोस्टली बॉयज के यहाँ पर आ जाता है, यहीं इस साइड पर आ जाता है। उसके लिए बहुत ये बेस्ट चीज़ है। ठीक है। हॉट सेल प्रोडक्ट है हमारी, इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं इतनी छोटी सी बोतल है, 1-2 दफ़ा यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, ये जो छोटी सी बोतल है ये 5 मंथ्स इजीली यूज़ हो जाती है। डेली हमने करना है? हाँ जी, इसको वीक में 2 टाइम्स हमने यूज़ करना होता है ना। तो उससे होता है क्या है कि आपने 4 to 5 ड्रॉप्स या 6 to 7 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं और आपने ऑयलिंग कर लेनी है, अपने ऑयल में मिक्स। अच्छा, ऑयल में मिक्स करके करें, ठीक है। इसको शैम्पू में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। मर्द हजरात ऑयलिंग थोड़ी कम करते हैं। ऑयली तो नहीं है ये ज़्यादा? नहीं, जब ऑयलिंग में इसको ऑयल में मिक्स करके यूज़ करेंगे तो वॉश कर लें। हाँ जी, 3 आवर्स के लिए इनफ होता है। ठीक है। अच्छा बुशरा, और भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, मैं अभी और भी आगे आपसे पूछती हूँ। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले मैं ज़रा मार्को की तरफ आती हूँ। मार्को, व्हाट डिड वी डू? So we missed some step, but it's just the pasta cooked. We keep so we take out all the Did you add anything? No, just pepper. Just pepper. Yeah. Okay. So this is we take it out. We keep all the caramelized, you know, when you the caramelized meat on the back. Okay. And we just add some water. That's it. The cooking water. Yes. And this, what is this? This is the pecorino. Okay. And just cheese. freshly. So there's another break we need to go on now. So we'll come back and we can do this. Sure. जब ब्रेक से हम वापस आते हैं, इसके बाद हमारी अगली रेसिपी होगी। वो क्या है, मुझे तो इंतज़ार तिरामिसू का है। इट्स डिज़र्ट एंड इट्स अ एक्सीलेंट कॉफ़ी डिज़र्ट। ये ख़ास इटालियन का वो डिज़र्ट है, ये भी हम सीखेंगे। और बाकी बुशरा भी हमें और कुछ बताएंगी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आज शेफ़ मार्को हमारे साथ हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहे हैं। इटालियन क्विज़ीन के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने जो अपनी दूसरी रेसिपी पास्ता की स्टार्ट की थी, स्पेगेटी की। स्पेगेटी अलग बॉईल किया था। एक टिप हमें आज सीखने को मिला कि ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सॉल्ट। इसके बाद में ये जो प्रोसेस्ड मीट था, ये इन्होंने इसमें अब ऐड किया है और सिर्फ वाटर, सिर्फ पेपर गया था इसमें। एंड दैट्स इट। सो सिंपल. Because all the flavor is in the meat, so we don't need something because it's to already add too much. processed. Yeah, right? all the, you know, when you have the best tomato, when you have the best cut, when you have the best cheese, you don't need to add salt. You know.
And you have the best chef and his best thoughts on the recipe. You don't need to add anything. So, okay, our pasta now it's together with the flavor. Yes. We add the egg yolk. So it's 1 egg yolk per person. Now, Okay. 1 egg yolk per person. We stop the fire, otherwise will be overcooked. And why do we add this egg yolk? Egg yolk to make the creaminess. Okay. So quantity it's 1:1. So for the cheese, I will add the parmesan and pecorino. इतना सादा कोई sauce ही नहीं. There's no sauce in this. The sauce is coming with with the cheese. with the eggs and the cheese. Yes. Okay. Egg और cheese की वो sauce खुद ही बन जाएगी. Yeah. हल्का सा warm होगा तो. And this is ready. Yeah. Nothing else. Nothing else. Wow. But the flavor you will try. It's very very good. And in Italy this is very common. Yeah. This is called. चलो Sorry. ये भी तैयार हो गई है दूसरी रेसिपी. This is very common in the south of Italy. Okay. Always keep some water with you, Okay. the cooking water from the spaghetti, Alright. because it's And the stove is on, right? Okay. it's off. It's off. But it will be Simple. creamy now with the cheese. Will be melted slowly, because if you put on a straight fire, will be overcooked. Okay. So we don't want that. No, we don't want that. Little and You see this on creaminess? slow. Okay. ये देखिए वो चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो रही है तो वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर Yeah. दे रही है. ठीक है, ये भी रेडी हो गई है. So while you are serving this in a dish, I'll just get to know about some more beauty products. Yeah, sure. हाँ जी बुशरा, हम बात कर रहे थे, एक तो आपने हेयर स्कैल्प का वो बताया था जी जी। और काफ़ी सारी रेंज है जिसमें आपका हेयर भी है, स्किन भी है, लिप्स का भी एंड क्रीम्स भी हैं इसमें. नहीं, ये पाउडर्स हैं. हाँ. अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है यहाँ पर एक्नी वालों के लिए. अच्छा ठीक है, दाने उसके लिए हमारे पास कंप्लीट एक्नी रेंज है जिसमें एक्नी सीरम है, एक्नी क्लिंजर है और एक्नी सॉप है. ठीक है. अब कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो एक्नी की एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट जो दूसरी प्रोडक्ट है वो उनकी स्किन से जो है वो मैच नहीं कर रही ठीक है. होती, जिसकी वजह से उनकी जो एक्नी है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती. अच्छा. उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्लिंजर भी अपना लॉन्च किया है, हमने सॉप भी अपना लॉन्च किया है. पूरा फेस वॉश का Exactly. रेंज है. ठीक है. ताकि एक्नी कहीं से भी उनके फेस के ऊपर ना रहे और है. जो स्कार्स हैं, जो गड्ढे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं. ठीक है. अच्छा मुझे बुशरा एक तो ये फिर से बता दो कि अगर ऑनलाइन इन्होंने ऑर्डर करना है तो वो कहाँ जाएं? ये www.icorganicsolution.pk वहाँ पर ऑर्डर वहाँ करें. पर अच्छा order वहाँ पे करें. प्राइस वगैरह भी लिखी हुई है जी सारी? बिल्कुल, प्राइस लिखी हुई है. रेंज क्या है वैसे बुशरा? हमारी 1000 से 3000 तक है सारी रेंज. ठीक बट है. आपके शो में आए हैं तो कुछ फायदा करवाएंगे आपको देखने वेरी में. गुड. डिस्काउंट. एग्जैक्टली, डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कोड ये लोग अवेल कर सकते हैं 10% का. ठीक और है. उस पर ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे HMT. HMT लगा के जब भी जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं प्रोडक्ट HMT लगाएं. ठीक है. HMT लगाएं, आपको 10% जो है वो डिस्काउंट ठीक है. मिल जाएगा. सही है, सारे आपके प्रोडक्ट्स हाँ पे जी, ना. ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टिंट हैं. हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. चीक्स को लाल करने के लिए हम लोग तो बहुत सारे ब्लश ऑन जो कि बार बार करते रहते हैं, ब्लश ऑन मिट जाता है. टिंट्स इज एक्सीलेंट बाय द वे. सुबह से लगाओ रात तक चलेगा. 24 आवर्स के लिए ये स्टे करता है और इजी टू ब्लेंड है. कहीं पे स्टेन नहीं छोड़ता, कहीं पे ये आपके फेस को कुछ होता है आप लगाते हैं उसको फौरन से वो करना पड़ता है, ब्लेंड करना पड़ता है, वरना वो स्टेन छोड़ देता है. वो जो भी मेकअप किया था वो भी सारा खराब हो जाता है. हाँ, इसलिए फौरन मले आप. हाँ जी, इसका ये कहीं पे स्टेन नहीं छोड़ता. अच्छा, इसमें कौन से कलर्स हैं आपके पास? इसमें हमारे पास 3 कलर्स है. पीच है, चेरी है और इसके अलावा पिंक है. अच्छा, और इस पे भी डिस्काउंट है? इस पे भी डिस्काउंट है. आपके शो में आए हैं, फायदा तो करवाना है ना. ये अच्छी बात है. और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, वेरी अफोर्डेबल है. आपकी सारी अफोर्डेबल है. 1000 to 3000 बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. जबरदस्त. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ये टॉनिक है. हाँ. टॉनिक जो है ये बेसिकली 12 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है. ये ऑयल है? जी जी, ऑयल है एक तरह का, लेकिन ये 12 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है. हाँ, लग रहा है खालिस जड़ी बूटियों वाली स्मेल है इसकी बिल्कुल. और 100% प्योर है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है. इसके अलावा जो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं एज से पहले, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है. ये बालों को काला करना शुरू कर देता है. 1 माह यूज़ करें और उसके बाद बेहतरीन रिजल्ट्स वो लाइव उन लोगों को मिल जाएंगे. सही है. अच्छा, जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टिकटॉक देख देख के डार्क सर्कल्स बड़े हो गए हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है. ये क्या है? कैफीन सीरम. अच्छा, डार्क कैफीन. सर्कल्स के लिए. अच्छा, मतलब ये ड्रॉपर से इससे लगा लें? ये नहीं, ये इसके ऊपर ना रोल ऑन है.
ओके, ये यहाँ पे आप रोल हाँ जी, रात को सोने से पहले जस्ट रोल करें और ये आपके डीप से डीप जो डार्क सर्कल्स है ना वो भी खत्म कर देता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन ऐड किया गया है और कैफीन जो है वो डार्क सर्कल्स के लिए बहुत बेहतर है। आपने देखा होगा होम रेमेडीज में लड़कियां जो है वो टी बैग्स को आंखों के ऊपर लगा रही है, इसके अंदर कैफीन होती है ना, तो इसके अंदर हमने डायरेक्टली कैफीन ऐड किया है। ये पूरी बोतल इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। ये बोतल में 5 to 6 months खत्म चल जाती है और डार्क सर्कल्स तो 2 months में आपके खत्म हो जाते हैं। डीप डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है क्या? इसका भी मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा मैं अपना शेफ के पास जाती हूँ। यस शेफ, व्हाट्स द अपडेट? See now, I have these cherry tins, so I'll have like pinkish cheeks like you, natural. Because we are shy or something else? No, we're glowing. Okay, so this is our pasta. This is ready. Okay. Carbonara. Okay, thank you. The problem is not a problem, but because in Italy we eat very fast. Oh. Very fast, but because we enjoy. Because it's good if you. No, this one especially carbonara because it's eggs, so we cooked. If we still after it's coming, And only this kind of meat is required in this. Yeah, the guanciale. Yes. ये authentic Italian and the जो pecorino. रेसिपी है ये आपको सिखा रहे हैं। अच्छा, हमारी अगली रेसिपी कौन सी है? Yeah. Next recipe. So next recipe will be Milanese. So veal Milanese. Okay, this is veal. Yeah, veal Milanese. The veal actually it's a young cow. Yes. So there are veal, vitellone. Veal it's around. You have some really difficult names. Italian dishes have. Ino is mean small. I don't know. One is mean big. Whenever we go through this menu card, my it's name like is so Saracino. confusing. Saracino, so I'm small. So only Italian people can pronounce these names. Okay. So anyways. okay, I put some sunflower oil here. Okay. Okay. Here we have some eggs. Okay. ये रेसिपी हम ब्रेक से आने के बाद करें, है ना? Sorry? अच्छा, we'll wait and we'll go on a break. Okay. And when we come back, then we start off with this recipe because you are too fast, chef. I'm too fast? Yes, you need to slow I down. was too slow. हाँ जी, ये IQ क्या है? IQ की फुल फॉर्म है इकबाल। इकबाल, अच्छा। मेरे फादर साहब के नाम से मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, वो वफात पा चुके हैं। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं। माशाल्लाह, इंशाल्लाह लाहौर में हम लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लाहौर में बहुत जल्द हम अपना एक आउटलेट भी बनाएंगे जहाँ पर लोग इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं अच्छी सर्विसेज देने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5000 प्लस पॉजिटिव फीडबैक मौजूद है। जो अभी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका पॉजिटिव फीडबैक ही आता है। और आपका फेसबुक पेज भी है? हाँ जी, फेसबुक पेज भी हमारा IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से है, इंस्टाग्राम पेज भी IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से है और वेबसाइट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये भी बता चुके हैं कि 10% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, 100% प्योर है। सो थैंक यू सो मच बुशरा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंशाल्लाह आपका प्रोडक्ट और फ्लरिश करे और सब जो खवातीन हैं, मर्द हज़रात, वो सब खूबसूरत हो जाए, अच्छे बालों, घने वाले बालों के साथ, पिंक चीक्स के साथ, अच्छी स्किन के साथ। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये व्हील के साथ क्या करेंगे होगी तो बहुत ही सिंपल, बट आफ्टर दिस ब्रेक यस, वेलकम बैक। शेफ मार्को हमारे साथ हैं और आज हैं अपनी अगली रेसिपी पे। ओके, फर्स्ट टेल मी, इज दिस लाइक अ मेन कोर्स नाउ? This is a main course. Yeah. Finally we are here. How many courses do you have? Like Italian people have a lot of courses. Yeah, but I think it's already antipasti. I just show you one small one, simple. Okay. But we have like thousands of recipe in every city. Like an 8-course meal, 9-course meal, 14-course meal. How many? Yeah, courses? almost. Yeah, Really? In a Sunday, yes. Oh it's easy God. to find. I mean, for that I my passion because my mother cook very well. Acha. So moms are always good cooks. All moms are very good cooks. Always. All right, so let's start off with the recipe. Yeah, this is a main course. So it's a veal. Usually it's called cotoletta alla Milanese. So cotoletta, it's the ribeye with the bones. Ribs. Okay. So it's with the bones. And you've removed the bones. I removed the bones because will be a little bit too long here to cook. So we just put first on the flour. I just put a little bit of salt and pepper. अच्छा, सिर्फ salt और pepper है उसमें, मीट में, और कुछ भी नहीं है। Yeah. ये dry. So
you just put it in the flour first. This is called panatura all'inglese. This is in English breaded. Breaded, okay. Maybe the English invented that, so for that. Okay. So with crumbs. yeah. So first flour, second eggs. This is going to be a good dish. You think Something so? of my Why, type. the first one you don't like? Okay. You didn't try it. You didn't I try like this fried and So you are a meat crispy. lover, right? अच्छा, फिर मैदा, अंडा और And crumbs. in breadcrumbs, yes. Simple. मीट का अपना Simple, flavor simple. होगा. It's up to you. If you want a more crust, you can just. I will do one normally, one not. Okay. So if you want a more crust, you put again. Double coating. You double coating, yes. So chef, you'll make some sauce with this, or you No, just serve this like... one we serve just a simple with a little bit of rocket on the top. Okay, rocket salad. leaves. ठीक है, वो rocket leaves के Yeah. साथ आप इसको serve करें. And here we have this cooking oil. Yeah. इसमें आप deep fry कर देंगे. Yeah. ठीक है. So you carry on with this work. Yeah. Wow, because we have your boss It's a here little bit with us. messy, but it's okay. It will be nice. आइए जी आपकी मुलाकात करवाते हैं. Thanks. Consul of Italy in Karachi हमारे साथ हैं Mr. and Mrs. Danilo. Hello. Hello. How are you? Good afternoon. Is it good afternoon yet or still good morning? I'm not sure. Well, anyways, your chef, by the way, he's brilliant. Okay, He's doing a really good job. well, thank you. Yes, it's, Yeah, Chef Marco? He's very Sorry, famous. Yes. And this is his very first show, he was saying. I'm his very first host. Anyway, so Thank it's you. really an honor having you on my show. No, thank you must for have having been very us. busy. Thank you for inviting us. This whole week must be very busy for you because this Italian Cuisine Week is going on around the world. So we would love to know about this. What is it all about, and what were your activities here in Karachi related to this Italian cuisine? Yeah, thank you for the question. So as you were saying, it's a world event, so it's Yes. organized all over the world this time of the year. Okay. And this is the 5th edition. Okay. And Fifth edition means like happening for the 5th time. It's the 5th edition, so it's like the 5th year we do this. So it's an event organized by Ministry of Foreign Affairs. And every year you have every this year, event. every year around this time of the year. All right. Okay. Why this time? You know, some special reason at this time, like winters. Well, here? I think the purpose of the event is to promote Italian food, to promote Italian culture, Yeah. to promote Italian hospitality. So for us, this is also it's around holiday times in Europe. So Good. I think this also is having a holiday here in Karachi. Are you people enjoying here in Karachi? yeah, absolutely. It's fantastic. For how long have you been here in? 2 months. 2 Month months. and a half, yes. So did you get time to explore the city? Yes, already. Absolutely. You went to different places, like you did shopping, food, anything special you did here in Karachi? Yes, we had the opportunity to visit already Tar Desert, Okay. Miti. Acha, the Sindh side you went. Exactly. Thanks to the cultural minister, that was very. He gave us this opportunity to visit all this lower Sindh. Yeah. We also have the opportunity to visit many places, also for testing Pakistan food. Oh, you did? Indeed, the How was it? Can eat everything spicy? Yeah, Very spicy. very yes, spicy. I became a big fan of biryani and all our barbecue. Biryani is like very a- good barbecue. Barbecue is good. Yes. Are you people like meat lovers? Yeah. Yes. Barbecue is good, and you can even say make it less spicy, and you can enjoy the meat with full fat and everything. Indeed, we eat everything. The concept is completely Pakistan. And did you try the gravies, Pakistani gravies like korma and kadai and nehari pie? Did you hear about all this? Yes. You have tried? Yes. We tried. We tried Didn't like most much? of it. No. of it. It's good. It's good. It's good because it's very spicy. And I see that Chef Marco is making very simple, non-spicy food. Well, Italian cuisine is a bit simple. In fact, it's based on 4, maximum 5 ingredients. That's so it. on that side is a bit different from Pakistani cuisine. Yes, So this is like we try to have few ingredients, but like very good ingredients, Yes. and to process the food in a very good way. And very healthy food. Yeah. But I can talk about Italian cuisine, Yeah. but she can cook Italian cuisine, so it's much better. Ah, yes. But I think it's all we are very simple. But I repeat, it's the quality of the I can ingredients. see how simple.
And the thing is, you know, Chinese cuisine, they have thousands of ingredients in one recipe. They have a lot of Using vegetables. Soya sauce, salt, pepper, OMG, blah, blah, blah. A lot of flavors. So many ingredients to one recipe, you know. Actually, you know, the whole world is filled with different flavors, and whichever you want, you love, and you just keep on trying. So did you learn any Urdu words here? Yes. Yeah, you have. learned Tora Tora. Thoda thoda. Very good. This is. मेरा नाम है Antonella है. अच्छा आपका नाम है अच्छा. ठीक है. She's loving it, I guess. So you're going to stay here more, like for how long you're here? Normally 3 years. 3 years. 3 years. Yes. Oh, good, good. And did you do shopping here in Karachi? Excellent cultural things and oriental things. We didn't have the opportunity to visit The markets and local markets, Okay. because it was a little complicated You for should. us. You will yes, enjoy. Yes. And was a busy period for us in the first 2 months because we did a lot of activities. So, okay. But now I think that also for respect to the situation, we will move also to Sadr Market and visit also this. Because I think it's important and you're getting nice a experience. chance, you know, to explore a new country, a new city. So how do you spend your time? Like, you know, apart from your working hours and office hours, what do you do? What are your activities? You know, we always wonder, these council people, what do they do? Where do they wander around? Well, I try to meet as many people as possible. So yeah, try to be around to understand. You know, the first months are very important here to try to understand the society. It takes time. Yeah. And you know, food is an important part of it. You know, food is also what we eat. You know, we share with our friends. Yes. We want our family to have the best food. So this is the idea also of Italian Cuisine Week. Is about sharing. You know, it's about communicating. Yes. When you learn a language, usually the first words you learn are it's food, no? Isn't it? Food brings people together. Yeah. So that's our idea, you see. And you're a linguist. I was just going through your CV. You know a lot of languages. No, it's not true. It's not true. Really? Pakistani That people, was they know, lie. they know a lot of language because you know Sindhi, you know Urdu, you know English. Oh, it's like that. No, but you also know Arabic. Yeah, a bit. Yeah. And Italian and French and Dutch. Yeah, some Dutch. So how would you say? I'm going to ask you in a bit. So I'm missing the Arabic way, but I speak French, Italian, Spanish as well. So. Not a big deal. We have different experience, but we make Not a maybe big deal. meet the same nation. So. And he knows how to cook. I don't. And you cook for them every day? Some Italian food? I wish. Why not? For them? Yeah. Yeah, almost, yes. Since I'm here, yes. He's going to go away. Yeah, you're here for the event or you go he away? will stay here until Thursday, right? Until Thursday. Yeah. Okay, and then you're going back. Yeah. But we can bring him back if you want. No, we've got some really good chefs and experts here in Karachi. Which you is the should best try one. them. True. Haji, what's the update, Chef Marco? So I cooked the first one, so we Yeah. can already show the first Let one. me It's see. not Okay. too much difference, you know. The thing is, this is not only one coat. The other one is double. And So you're it's sure more it's cooked from inside? It's cooked from inside. You can see from the texture and the timing. Okay, the timing matters. Yes. So this is done. This is done. So I just finished to cook this one, but slowly for later for us. All right. And this one is our result. This is ready. Yeah. Meat का वो piece इतना tempting लग रहा है ना? हाँ So जी, you break see तो नहीं आ रही है? how crispy is it? ठीक है. Crispy. Yes. Even though. Sorry. Just take the plate. So all this we finish it. चलो जी, इसको भी ये सर्व करते हैं, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. After when we come back from break, I'm going to ask you something. But do we get to eat it as well? Are you hungry? Depends if you're hungry. I wasn't hungry, but now I've become hungry. Yes. Of course, you know, you can make some slices and we can serve. ठीक है जी, ब्रेक ले लें. हम ब्रेक से वापस आते हैं. इसको जब तक सर्व करके रखेंगे. हमारे साथ हैं कॉन्सल of Italy in Karachi, Mr. and Mrs. Danilo, and we have Chef Marco with us. और इसके बाद बारी होगी tiramisu की. I am sure and I'm waiting for that. So stay with us. होती है प्यार की बात दिल से पट
ओके वेयर बैक जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने कट करना है। कट क्या करना है, वो जो व्हील का पीस उन्होंने डीप फ्राई करके रखा हुआ है, ये सामने आपके कट करेंगे। आर यू कटिंग इट, स्लाइसिंग इट? I will We're now, waiting for you. just We're to back show now. We're you. live. Here we go. So Yes. now, The crispiness is still there. yeah, ये देख लें जी, इसकी भी सर्विंग हो रही है because Mr. Danilo is hungry. yeah. And it is such a good thing. अभी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि this is for the first time they're together on my show. Otherwise ये अपना busy होते हैं, वो अपना busy होती हैं. And she's from America and you're from South Africa, and then you met and you got married, and Pakistan brought them together here. Very nice. Good to hear your love story. Thanks. So I've heard that Italian people really they enjoy food. They love eating. So they also enjoy cooking as well. You're a good cook, I'm sure. Yes. Yeah. And what about him? Does he go in the kitchen? No, Do he's something? good, but Good, less good. Less good, more messy. More messy, yes, that's for sure. That's, you know, usually men are. Husbands are very messy. Okay, so how do you say it in Italian, Italy language, that I love lively weekends and this is my favorite cooking show? Okay, amo lively weekends. Say it in the camera, so we'll record it and keep on Okay. repeating it. Amo lively weekends e questo è il mio show preferito. And this is your favorite show. E questo è il mio show preferito, sì. Okay, now in French. J'aime beaucoup lively weekend et ça c'est mon show préféré. Okay, now in Dutch. Ik hou van lively weekend. Het is een gepreferred show. Okay, now in Arabic also, can you? Start to sweating. No, I'm making his brain work for the day, you know, that's like a quick start. She can do it in Spanish. She has very good Spanish. ok. Sería, me encanta cocinar y este es mi show preferido. Oh, everybody loves my show. Thank you. Yeah, is Arabic coming? Well, Now in Urdu. Now in Urdu. I can I'll repeat. teach you. Okay. I'll teach you. Lively Weekends मेरा favorite show है. okay, that's easy. Okay. फिर से बुलाती हूँ. नहीं, everything should be in Urdu. Oh. Lively Weekends मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है. This is a little difficult. Lively Weekends मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है. मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है. Lively Weekends. Lively weekends. मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है. Yes! Bravo! And what about you? Hey. Okay, that's chalega. Oh wow, what did you do with this? So just slice it. Ah. Put a little bit of salt on the top. Ah. It's better mild on salt because it's crunchy. Okay, and And what's this? this is rocket leaves. Yeah. A little bit of balsamic just to give a little bit of sour. Okay. Lemon if you want, and cherry tomato. Just for the color. You like this food, right? Italian. Simple, no spice. Very good. Very But you can add more spices as Yeah, well. if you want, why not? I Yeah, can yeah, put you can you know, make spicy you can sauce put a if you chili want. powder in the flour. No. No. Chili it's possible. powder. Oh yeah. So if you're at home, you want to do the same. You can do a masala in the chili in the flour. अच्छा ठीक है. You breaded your steak. It सही will है. be a फ्लावर में flavor. आप लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दें. For- एक कॉलर हमारे साथ है. We have a live call. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी. आज का शो आपको कैसा लगा? आज बड़े मजे मजे की बहुत बातें चल रही ज़बरदस्त हैं. माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट से देख रही हूँ मैं। पहले आपने वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से देखा। सही है. अच्छा और मुझे बताओ, वेबसाइट आपको मैंने उनकी चेक की है। आपको ये इटालियन क्विजीन वीक के बारे में पता था? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये नहीं मुझे नहीं मालूम था। हाँ, not many मुझे people know नहीं about मालूम this था। Italian बहुत cuisine अच्छा लग week रहा है। around आपकी the world. गेस्ट आज की बहुत अच्छी है। आज का प्रोग्राम बाकी बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपीज आप कह रही थी इजी है बट बहुत यूनिक और बहुत मजे की लग रही है। अच्छा हाँ, सिंपल है और अच्छी रेसिपीज हैं. जी बहुत ज़बरदस्त। स्पैगेटी बनाइए, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। ज़रूर आज ही try या फिर कल तो इंशाल्लाह मस्त ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और इटली के हवाले से कोई सवाल करना है इनसे? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अच्छा चले, मैं आप ही की तरफ से सवाल कर लूँगी. हेलो हाँ जी. अच्छा, आप बोलिए। इटली के हवाले से कोई सवाल करना है कि मस्ट प्लेस कौन सी है, कि मस्ट जब भी इटली जाएं वो ज़रूर देखें, ये पूछ लें इनसे. नहीं सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बहुत अच्छा कम आ चले रही है। ठीक है.
But anyways, thank you so much. बहुत शुक्रिया. Are the visas open for Italy? Like anybody who wants to, or they're like closed for the moment? For the moment, the problem is that tourism is not allowed in all the Schengen countries. Yeah. So it's not about Italy. It's all Schengen. As you know, I hope as soon as possible. It's Let's hope for the best. because of the virus. In Yes, fact. yes. But Dubai it's open, so you can come visit me. No, You can come back. No, you have to come back You here. have to come back. He is so cute, you know. I was just asking him, why did you end up being a chef? Why not a model or an actor like Tom Cruise? I need to be on the wheelchair, in the wheelchair, on the hill. Yeah. अच्छा जी, टिरामिसू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से ब्रेक आ रहा है. मैं ज़रा यहाँ पर चेक करूँ कि ये कर क्या रहे हैं. We're going on a break again. Yeah. But you can just explain a little bit. Yeah, This of is course. like So this is it's a biscuit, ladyfinger or savoiardi. So this is like plain sponge cake. it's but it's more crunchy. Can I try? You can Taste? try, of course. It's Try just a कर लेते हैं ना. vanilla. अच्छा जी, ये sponge Just cake put a है? little bit of vanilla. The original one is crispy, Sponge crunchy, cake, yeah. but this will be soaked on coffee. Okay. Okay. And this is cheese? Cream, little bit of mascarpone, little bit. This is the main of the recipe. Mascarpone. Mascarpone Yeah, cheese. there are a lot Okay. of brand, but And egg yolks. egg yolks, and- sugar, cocoa, And and that's it. Cream, This that's is cream, a little bit. Yeah. ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, बताते हैं आपको. स्पैगेटी कार्बोनारा. अच्छा, स्पैगेटी 125 ग्राम, अंडे की जर्दी 100 ग्राम, बीफ चिकन 120 ग्राम, इटालियन चीज़ 50 ग्राम, पामेजान चीज़ 100 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम, नमक 5 ग्राम. तरकीब: स्पैगेटी को नमक के साथ उबालें, फिर बीफ बेकन को चॉप्ड करके पैन में क्रिस्पी होने तक पकाएं. बीफ को पैन से निकालकर एक तरफ रखें और चर्बी को पैन में रखें. फिर पिसी काली मिर्च डालकर रोस्ट करें और थोड़ा सा पास्ता का पानी शामिल करें. 10 मिनट पास्ता छान लें. फिर पास्ता को पैन में डालकर बीफ बेकन का लिक्विड शामिल करके 2 मिनट पकाएं. अब चूल्हे से उतारकर अंडे की जर्दी, पामेजान चीज़ और इटालियन चीज़ डालकर सीजनिंग शामिल कर दें. फिर प्लेट में निकालकर क्रिस्पी बीफ बेकन रखें. आखिर में पिसी काली मिर्च डालकर सर्व करें. टिरामिसू. अज्जा: क्रीम चीज़ 500 ग्राम, विपिंग क्रीम 200 ग्राम, कास्टर शुगर 150 ग्राम, अंडे की जर्दी 120 ग्राम, कॉफ़ी कप्स 8 अदद, बिस्किट्स लेडी फिंगर 26 अदद, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत. तरकीब: विपिंग क्रीम को अच्छी तरह फेंट लें. अब अंडे की जर्दी को चीनी के साथ फेंटें. फिर क्रीम चीज़ को मिक्स करें. फिर इसमें विपिंग क्रीम को शामिल कर दें. अब टिरामिसू की लेयर के लिए क्रीम चीज़ कॉफ़ी में भीगे हुए बिस्किट्स डालकर तह लगाएं. दूसरी लेयर के लिए क्रीम की तह लगाएं. उसके बाद दोबारा क्रीम और चीज़ की लेयर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. आखिर में कोको पाउडर डालकर सर्व करें. टोमेटो ब्रोशेटा. अज्जा: सार डो ब्रेड 130 ग्राम, चॉप्ड प्लम टोमेटो 200 ग्राम, इटालियन ओलिव 5 ग्राम, बेसिल लीव्स 2 ग्राम, बाल्सामिक ग्लेज 4 ग्राम, जैतून का तेल 20 मिलीलीटर, लहसुन 2 ग्राम, नमक 6 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, ऑरिगानो 2 ग्राम. तरकीब: ब्रेड के 2 स्लाइस को ग्रिल करें. फिर कटे टोमेटो, नमक, काली मिर्च, कटे बेसिल लीव्स, इटालियन ओलिव, बाल्सामिक ग्लेज, कटे लहसुन, ऑरिगानो और जैतून का तेल डालकर मिक्स करें. अब ब्रेड के स्लाइस पे रखकर बेसिल लीव्स और टोमेटो को रखकर सर्व कर दें. विटेलो अला मिलानीज. अज्जा: व्हील रिब आई, बीफ 300 ग्राम, पामेजान 30 ग्राम, चेरी टोमेटो 100 ग्राम, अरुगुला सैलेड 125 ग्राम, चेरी टोमेटो 100 ग्राम, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 300 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, तेल 500 मिलीलीटर, नमक 2 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, नींबू 1 अदद. तरकीब: बीफ के टुकड़े को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से काट लें. किनारों पर 2 से 3 कट लगाएं. पैन में तेल गर्म करके मीट को पकाएं या बंडों को फेंट लें और बड़े पाई प्लेट में निकाल लें. फिर कटलेट्स मैदे से कोट करके अंडे में डिप करें. फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करें. अब पैन में डालकर 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से पकाएं और निकाल कर तेल जज्ब कर लें. उसके बाद नमक, नींबू और काली मिर्च डालकर सीजनिंग करें. आखिर में अरुगुला सैलेड और चेरी टोमेटोज और पामेजान के साथ सर्व करें. होती है प्यार की बात, दिल से पकाए तो भी खाए, कहता जाए lively weekends, lively weekends, तो भी खाए, कहता जाए lively weekends, lively weekends. टिरामिसू. अज्जा: क्रीम चीज़ 500 ग्राम, विपिंग क्रीम 200 ग्राम, कास्टर शुगर 150 ग्राम, अंडे की जर्दी 120 ग्राम, कॉफ़ी कप्स 8 अदद, बिस्किट्स लेडी फिंगर 26 अदद, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत. Weekends, प्यार बढ़ाए
lively weekend. चलें जी ज़रा जल्दी जल्दी हम टिरामिसू सीख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल, इन्होंने कहा 6-7 मिनट में बन जाएगी। अच्छा किया क्या, ये स्पंज केक है, यहाँ पर कॉफ़ी घोल के रखी हुई है। हाउ मच कॉफ़ी एंड हाउ मच वाटर? No water, just No a coffee cup, normal coffee, black coffee. Yeah. Just 2 cup for 4 glasses, more or less. What, water? Cup, like cup. Like coffee? Yeah, coffee cup. Liquid coffee? Yeah, liquid coffee. How did you make this liquid? Just machine or just the powder coffee in. And with water? With water, yeah. Yes. But it should be black, you see. अच्छा ठीक Should है। be black. हाँ, water is there, right? Why not make a tiramisu with chai tea अच्छा नहीं, instead of chai coffee? tea नहीं, coffee. You know, you put your biscuit in the chai. Dip You it. know, it will be a fusion. अच्छा ये देख ले डबल बॉयलर में इन्होंने क्या किया? This is egg just yolk egg yolk and and the sugar. sugar. And So how many this- yolks? 2-3 yolks? It's around, okay, the recipe, yeah, two egg yolks. Here I put a 4. So 4 egg 4 yolks, egg okay. yolks for under 25 grams of mascarpone. Okay. Okay. So I do this why? Because for So this, pasteurized. how much sugar did you add in for you? I put a 75 grams. 75 grams Yeah. sugar और इसको constantly वो whisk कर Yeah. रहे हैं। अच्छे So से बीट it's करेंगे और better फिर with the इसमें जाएगी machine. mascarpone cheese. You're going to add the cheese in this. Yeah. So I did this process just to pasteurize the eggs, to be sure. Okay. I mean, in Italy we do without, because we take the eggs from Yeah, I mean, our buono, chicken, अच्छा, fresh. and yeah. So no, we don't have issue with that. अच्छा अच्छा। Just need to calculate. डायरेक्ट निकाला, ये थोड़ा सा कुक इसको हमने इस तरह से किया ताकि वो उसका कुछ भी है उसमें जर्म्स वगैरह वो सारा ट्रीट हो जाए। So now we do that to cool down a bit ओके and to agglomerate the air. So put the hair inside, ऑलराइट be foamy and white. ओके लेट मी जस्ट गो बैक टू मिस्टर Danilo. You were talking about you published a book or something. What was it about? Yes, absolutely. So this year edition of Italian Cuisine Week, it's dedicated to Mr. Pellegrino Artusi, Okay. who was an Italian writer of the 19th century, Okay. and he was a wealthy landowner in living in northern Italy, and well, basically he got sick, Okay. and he tried, while he was sick, he was trying to eat as healthy as possible to, Okay. to increase his Yes. health, to recover. Okay. He was a positive thinker, and he thought a lot about progress and science. So he wrote this book about the art of eating well. So how Okay. food influences our well-being, in fact. Definitely it does. So Okay. for us nowadays, it's quite normal to think like that. But in 19th century, it was something new, perhaps. Oh, okay. So You he dedicated this to him. Okay. yeah, and the book is also very important because it's the first, it's the most important book of Italian cuisine that was written after Italian unification in 1861. Okay. So it has a lot of Italian healthy recipes. Yes, exactly. So, and they try to create a unified Italian kitchen cuisine from regional cuisine. Okay. So, so it's like considered like the father of Italian cuisine, in fact. Oh, okay. Fine. So we made this The work book at the consulate. We published this book. Yeah, you. What's his name? Salvo. 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 Welcome to my show. You can have a seat if you want. Okay, this is the book. So. All right. So we published this book. Everybody at the concert worked on it. My wife as well, Salvo as well, which I want to thank especially for having helped us. So they made this. So this is available like everywhere This in is the market, this is or? free of charge. Okay, free of It's, charge. You can just pick one. Yeah. So it was published by Paramount Books, which is a Pakistani company, and so we selected the best recipes from this book by Mr. Pellegrino Artusi, and the recipes that are most suitable for Pakistani flavors and taste, people. So, and we wanted to bring basically Italian cuisine inside Pakistani and take Pakistani kitchens. cuisine to Italy also. Yes. That we also have to do. I will do that. Yes, your job. So yes, Very I nice. wanted to offer you this copy. Oh, thank please. you. Yeah. Thank you so much. I'll it's, enjoy the it's, Italian cooking. It's also translated in English inside. So the book is it's
bilingual, is Italian and English, so you can Okay, also both. learn some Italian words. Exactly. Oh, okay, all the translation of ingredients. Yes, thank you so much. And here's a small token of love from our channel. This will go with you. And it also has a recipe book by our very famous expert, Fantastic. Shirin Anwar. She has a live show. So Thanks this is a lot. like all her excellent recipes in this book. So you can make her, you know, do some Pakistani cooking. Yes. Learn some Pakistani cooking and some other things for you as well. Okay, Thanks a thank lot. you. And chef, there's something for you as well. Really? Yes, this NX Deluxe Pizza Pan will go Wow. with you. Yeah, wow. I will do pizza when You I'm know, off. yes, Italy, I think in Italy you don't use these pans, you just use those brick Well, we have, ovens. yeah, and- but not everybody have a wood oven at home, so it would be nice, especially in Dubai. You know, it's very helpful for us. Because, you know, at home, if I want to cook a pizza, as a real Italian. It will remind you of us. Yeah, thank you so much. Okay, so now back to the recipe. Yeah. Let's just finish So, this recipe. Okay, this is like a good Egg yolk. mix. हाँ, We mix it with the sugar. I had the mascarpone. ठीक है. Is there any alternative for mascarpone if you don't have mascarpone cheese? Mascarpone, Can this we is add this one something else? we found here on the market, Okay, but mascarpone the mil thing jati is hai, we yeah. can add the any kind of cheese? cottage cream cheese, yes, but it will Yeah. be too sour, you know. अच्छा, So it's better to add a little bit more sugar, ठीक maybe है. some drop of vanilla or kind of Okay. just to cover this because mascarpone is something very unique ठीक है. flavor. मस्कापोन लें तो लें, वरना आप क्रीम चीज़ भी ऐड कर लें तो उसका जो आइसिंग शुगर या डाला है वो आप थोड़ा सा Yeah. So slowly you add the white eggs. Okay. And now what you will do? Okay, you put together slowly, not all together, but This slowly is by whipped slowly. cream? Yeah, Okay, you're just folding the with whipped cream. And white since, egg, you know, our and special guests are here and we have this Monsalva products. You just take them out from the freezer and fry and serve to our guests. जब भी हो आप निकालें मोनसलवा की ये चीज़ें तो आज इनको हम चिकन सीख कबाब ज़रा खिलाते हैं पाकिस्तानी फ्लेवर देते हैं Have you tried सीख कबाब? Of course. Yeah, of course, yeah. Pakistani, they're a little spicy for ma'am. I tried yesterday, by the way. Yeah, you've tried? Yeah, very nice. Marco, did you try biryani? Biryani also, yes. Yes? Yeah. Too spicy for you too? No, I like spicy. You like I really He's like me. Just No, like because me. he's been working in Dubai and so, you know, you've tried a lot of cuisines there. So ये जी मोनसलवा के सीख कबाब आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के लिए फ्राई करेंगे और इनको सर्व करेंगे. And you can do a nice presentation with these. ऑयल हमें चाहिए, ऑयल नहीं है. ऑयल दे रहे हैं, ठीक है. लाइए जी, यही दे दीजिए. This is what happens in a live show, you know. Me too. So how was your experience overall, like here in my show, Well, this live show? well, thank you for having us. I mean, it's No, delightful, really. And pleasure is all mine. the only problem is that it's mouth-watering, so now I'm really We want hungry. just to say. Mouth, I'm doing the sikh kebab for Yeah. you. Don't worry. हाँ जी. So you're here for like a couple of years. You'll get to explore the city more and enjoy and learn more Urdu and learn more Pakistani recipes and any other coming event related to this Italian. Even today you have an event at a Beach yeah. Luxury Hotel? Beach Luxury was 2 days ago. We had a workshop, and today you have Food fusion. Food fusion. today you have food Oh, fusion. good and luck. Yeah. Good luck I will for do a that. parmigiana, Okay. so still not finished to cook. Oh, okay. And then okay. he'll be doing some trainings at Yeah, Pakistani all restaurants kind, here. Yeah. अच्छा अच्छा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी ये ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि ये पूरा वीक है. अच्छा ये एंड स्टेप हम जरा देख लेते हैं. यस शेफ मार्को, we're just about to end, so let's just Yeah, finish sure. the So our dessert. cream is done. Okay. So we'll just fill it the glass. You can use this is I make a single portion, but you can do a big. I mean, this is too funny for home, but it's nice to see and present. In Individual. Italy we do. I mean, my mom do in a glass like that exactly.
So You learned this recipe from your everybody, mom? this is a portion for one person. Okay. हाँ. Okay, so I put just make the one biscuits. serving so that we know what you're Yeah. doing. अच्छा ये केक स्पंज को उन्होंने डिप Yeah. किया कॉफ़ी में और उसके ऊपर गया. You love desserts? You sweet tooth? Yeah. I have a I sweet am. tooth. I am. Okay. Okay, and this is done. Almost, yeah. Almost. Less ingredients and good recipe. जी ये था हमारा आज का शो और जो आज की टाइमिंग्स क्या है हमारे आज के रात में रिपीट होगा शो 10:30 से 12 बजे हमारा शो रिपीट होगा और जाते जाते हम चाहेंगे कि कोई मैसेज एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स वाचिंग यू ऑल ओवर पाकिस्तान and anything about this Italian Cuisine Week you would like to say? Well, only one message that this is about food, is about culture, so it's about dialogue between Pakistan and Italy, and it's about sharing. It's so about this sharing. is what we want to promote. Because of that you are here. You are here in my show. Anything else, ma'am, you would like to say to the Pakistani women? I hope that they can enjoy our recipe that I selected very carefully for all Pakistan people in order that can be sweet Pakistan taste. Yeah. And I really enjoy the food here, even if it's too spicy for me. But I hope that Little by little, yeah. little by little. Tora tora. Tora. No, and I wish you all the And- best. And I hope you enjoy your stay here in Pakistan and have a good honeymoon. Thanks. Thank you. Chef, anything else you would like to say to our viewers? It was pleasure having you on my show, by the way. Yes, and whenever Thank you you so come much to to invite Karachi, us. you come to my show. I will. Yeah? I will. It will be an honor for that. So just yes, saying it I like mean that. just eat we're carefully done. with everything because food it's direct to our body, Yes. to our soul, and the scent is not only a pleasure but it can be very earthy if you don't care about the temperature, about cleanliness and things like that. So Yes. um, Yes, thank so it's you. select the best. Select always. the best, yes. Because we and- live only one time. So. And also take care of your good thoughts while eating and while cooking. Thank you so much once again. It was really an honor. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे भी बहुत मिलके. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान नए रेसिपी के साथ. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा सोचें, अच्छी सेल्फ टॉक करें. खुदा हाफिज़. प्यार बढ़ाए lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब